Dear students, today we will discuss representation of a matrix. In previous lecture, we have discussed the definition of a matrix. उसका जो conclusion वो थोड़ा बहुत यहाँ पे हम पहले discuss कर लें. A matrix which is defined as alpha from Nm cross Nn to K. जैसे प्रीवियस लेक्चर पे हमने ये डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स डिफाइन किया था. A function which is defined from cross product of initial segments to a set which is either subset of real set or complex set. This function is called a matrix, and we can define this by alpha times ij, which is equal to alpha ij for all I comma j. इस तरह हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं मैट्रिक्स का. डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल देंगे. इफ nm we take nm is equal to n2 which contains simply 1 2, and n जो है that is n3 we will take that it contains 1 2 3. therefore जो हमारे पास ये फंक्शन है, we have here alpha from n2 cross n3 to k, defined as alpha times ij, which is equal to alpha ij, which we define I plus j. जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है. now we see the elements of this matrix. I runs from 1 to 1 2 and j runs from 1 2 3. we have, when we take Cartesian product of these two, we get here Cartesian product of n2 and 3, that is equal to 1 1 1 2 1 3. इसी तरह 2 1 2 2 2 3. ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट. इसी सेट से होके k तक जो फंक्शन है, that is called a matrix. we have, when we take this ordered pair, when we define function this alpha to this, we get here alpha 1 1, which is equal to alpha times 1 1, which is equal to 1 plus 1, which is equal to 2. इसी तरह alpha second 1 2 जो होगा, that is equal to alpha 1 2, which is equal to 1 plus 2, which is equal to 3. ये alpha 1 1 है. इसी तरह alpha 1 3, dear students, we will get alpha 1 3, which is equal to 1 plus 3, which is equal to 4. यहाँ पे इसी तरह alpha 2 1 जो होगा, alpha 2 1 it is equal to alpha 2 1, which is equal to 2 plus 1, that is equal to 3. इसी तरह alpha 2 2, that is equal to alpha 2 2, which is equal to 2 plus 2, which is equal to 4. इस तरह alpha 2 3 जो हमारे पास है, that is equal to alpha 2 3, which is equal to 2 plus 3, which is equal to 5. ये हमारे पास मैट्रिक्स है. यहाँ पे dear students, we have this matrix and we have discussed it in previous lecture. This m suffixes m and n indicates the order of the matrix. This given matrix is of order m cross n. In this particular case, we have matrix of order 2 cross 3. नाउ द रिप्रेजेंटेशन, इसके जो एलिमेंट है इनका कोई ऑर्डर नहीं है. किस तरह है, कैसे इनका ऑर्डर देने के लिए वी हैव देन टेकन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स किस तरह हम लेते हैं, डियर स्टूडेंट्स, वी हैव दिस m. इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म in m horizontal lines and n vertical lines, representation of a matrix, a rectangular arrangement of mn elements
Because if we have a matrix from M cross n to K, then this set contains mn elements. We have function means range set में भी mn elements होंगे. We have a rectangular arrangement of mn elements in M horizontal lines and n vertical lines and enclose them within braces is the representation of matrix. Representation of the matrix. Just we have here m horizontal lines. It is first line, second line, so on up to mth line. N horizontal line is first, second, third, so on up to nth horizontal line. ये nth है, यहाँ पे ये mth है. And enclose them within braces. This becomes the representation of this matrix whose order is m cross n. Dear students, अब यहाँ पे जो एलिमेंट होगा इस तरह अरेंजमेंट करते हैं. यहाँ पे first element, when we take m equal to 1 n equal to 1, which we get alpha 1 1. यहाँ पे हमारे पास alpha 1 2, because we have first horizontal line alpha 1 3, so on up to alpha 1 n. इसी तरह alpha 2 2, alpha 2 3, alpha 2 1, alpha 2 2, alpha 2 3, so on up to alpha 2n. So on alpha m1, alpha m2, alpha m3, so on up to alpha mn. ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का representation होगा. Now we take the representation of this one particular matrix which is of order 2 cross 3. Dear student, अगर हमारे पास मैट्रिक्स is of order 2 cross 3, तब क्या कि जो representation इस मैट्रिक्स का होगा, that can be represented. The elements of this matrix can be arranged in 2 horizontal lines and 3 vertical lines, just as this. इस particular matrix का arrangement जो होगा, just 2 horizontal lines and 3 vertical lines and enclosed within braces. ये आपके पास 2 horizontal lines and these are the 3 vertical lines. अब यहाँ पे किस तरह arrangement जो है हमारे पास alpha 1 1 taken the position of this particular element here, that is alpha 1 1 यहाँ पे है, उसका वैल्यू हमारे पास 2 है. यहाँ पे 2 एलिमेंट है. यहाँ पे alpha 1 2 है, alpha 1 2 which is equal to alpha 1 2 which is equal to 3. यहाँ पे alpha 1 3 which is equal to say 4. अब यहाँ पे एलिमेंट जो लाना है that is alpha 2 1 जो है but which is equal to 3. यहाँ पे alpha 2 2 which is equal to alpha 2 2 is 4. Similarly यहाँ पे alpha 2 3 which is equal to 5. ये इस particular matrix का representation आ गया and in which are arranged in 2 horizontal lines and 3 vertical lines. Dear students, जो generally a matrix can be represented by this alpha ij of order m cross n, and we write I from 1 2 so on up to m and j runs from 1 2 so on up to, and it is the generally we denote a given matrix by alpha ij m cross n which is of order m cross n. I runs from 1 to m and j runs from 1 to n. And these, remember this, these horizontal lines, जो horizontal lines, it denotes as the number of rows. Rows क्या होते हैं dear students? The elements which lie on the same horizontal line. वो एलिमेंट जो एक ही लाइन पे लाई कर रहे होंगे,
they form a row of the matrix. जो एलिमेंट्स एक मैट्रिक्स के एक ही रो पे, जस्ट which lies on this row, they form a row. Sorry for this, the elements which lie on the horizontal line, they form a row. इसी तरह जो एलिमेंट्स एक ही वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हैं, they form a column. That is the elements which lie on the same vertical line is called column of the matrix. इसी तरह जो एलिमेंट्स एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन पे लाई कर रहे हैं, दे आर कॉल्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स. डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया. डियर स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स आपके साथ शेयर करने वाले हैं. इससे पहले की वीडियो का इंतजाम कर लें. डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आपके पास हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, और वीडियो शेयर कर लेना ताकि दूसरे बच्चे भी इनसे इस्तेफादा हासिल कर सके. थैंक यू. हैव अ नाइस डे. खुश रहो.